Welcome to the Nazir physics classes. I am delivering second lecture on kinematics. It's a series of lectures on kinematics. And today's lecture on kinematics, lecture 2, I am going to discuss certain points that I will tell you. Number one, that I am going to explain kinematic equations. Kinematic equations. And number second, that I am going to discuss one-dimensional motion. One-dimensional motion using kinematic equation. Using kinematic equation. Third, a special example of one-dimensional motion, motion under gravity. Number 4, application techniques, a few application techniques. These are the things that I am going to discuss in second lecture of kinematics. Kinematic equations, one-dimensional motion using kinematic equation, motion under gravity. This is an example of one-dimensional motion, and I am going to use kinematic equation. And application technique is a few examples which involve kinematic equation. First of all, what are the kinematic equations? Kinematic equations are the relationship between velocities, accelerations, and time. These are, and displacement and distance. These are the relations which we call as kinematic equations. In kinematic equations, we don't use Newton's laws. Newton's equations are not involved in kinematic equations. Kinematics can be done without Newton's laws of motion. Number one, velocity, final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. This is time, but it's not instantaneous time, it's time interval when a particle goes from position 1 to position 2, from initial time t1 to final time t2. Basically, this t is time interval, that is t2 minus t1. This is a vector equation. It is final velocity of an object, it is initial velocity of an object, it is acceleration of an object, and this t is not instantaneous time, it is time interval. But this is a vector equation, you must know. It's a vector equation. And every vector equation is basically three scalar equations in three directions. It is final velocity. अगर मैं आपसे पूछूं what is ये जो final velocity x direction में कितना है, what is the x component of final velocity? The answer is vx is equal to ux plus acceleration in the x direction into time, and velocity in the y direction is uy plus ay into time. It is final velocity in the y direction, y component of velocity. Finally, it is initial y velocity, it is acceleration in the y direction, it is time interval, and vz is equal to uz plus az and time. Either this one equation or these three equations in three directions. And if you want to use this equation in one dimension, use either of these three. If your motion is only in x direction, use this equation. If your motion is in y direction, use this equation. If your motion is in the z direction, use this equation. But generally you have motion only in the x and y directions. Okay. Now, this is the relation. If you are given initial velocity and acceleration, obviously you can find final velocity. But these three equations are independent. Suppose you have acceleration in the x direction, and ay and az may be 0. It's very much possible that the acceleration that you are using may have only x component, y and z component may be 0. So these three equations are not related to each other, they are quite independent. They can be quite independently used in three directions. This is first equation, which we can use. In three-dimensional motion, we can use this equation directly. In either dimensions, one x, y, and z, we can use these three equations. Okay, number second equation, kinematic. These are kinematic equations. This is one first kinematic equation that are being used in solving problems and objectives in physics. Number second, suppose I want to find displacement when a particle moves. But one thing is that I want to tell you, kinematic equations for here
that I am doing kinematic equation for constant acceleration. This is very important. Constant acceleration. So whichever equations I am writing, those are valid only for constant acceleration. अगर acceleration constant नहीं है, तो समझो ये जो equations है, they are not valid. तो उस सूरत में क्या करना है? Calculus का use करना है, थोड़ा सा और जाना है. That's very easy. We can do that later on. But this part of physics is only good for constant acceleration. Number second, suppose a particle moves from one position to another position in a very arbitrary way, तो उस सूरत में उसका distance भी cover होगा और displacement भी cover होगा. तो here in three-dimensional arbitrary motion, we have to use a good equation that is S. But this S is not distance, it's displacement. You have to be careful about it. With vector, this S is equal to U t plus 1 by 2 a t square. This t is again time interval. This t is t2 minus t1. Final time minus initial time, final time minus initial time is the time interval. Okay, this is also three-dimensional vector equation. So suppose I want to write this equation in one dimension, in x direction, or in y direction, or in z direction. I want to know what's the distance covered or displacement covered in x direction, or distance covered in y direction, or distance covered in z direction. So this is a very powerful equation. It can again be written in three components. Those three components are scalars. So every vector equation is just equal to three scalar equations. So what is Sx? It is distance covered in the x direction. That you can write only x also sometimes. It is इस u का लिखना है ux, ये time plus 1 by 2, इस a का करना है ax t square. It is one dimensional equation. Suppose you have motion only in the x direction. You just use this equation. अगर आपका motion 3 dimension में है तो use this equation. अगर आपका motion y direction में है तो you can use this equation. You can sometimes write y is u y t plus 1 by 2 a y t square. And sz is equal to you can write z is sometimes uz t plus 1 by 2 a z t square. If you have motion in the z direction, use this equation. In that equation, you must know what is z component of initial velocity, what is z acceleration. अगर आप ये पता है दिया हुआ होगा तो you can solve the equation. You can solve the problem. Okay, this is second equation. Of course, for constant acceleration. अगर acceleration constant नहीं है तो ये equation valid ही नहीं है. So this equation cannot be used if you have variable acceleration. Now you may ask me a question. अगर acceleration variable है तब क्या करेंगे? तब क्या करना है? तब तो और भी easy है, calculus के basic rules इस्तेमाल करके हम वो कर सकते हैं. But that is a third lecture possibly on kinematics. So okay, this is second set of equations. But don't think that these are four equations. These are either this single equation or these three equations, either of the two. It is either a single vector equation or it is three scalar equations. Okay, now third one. Third equation. Third one is, suppose v square minus u square is equal to 2as. Again, this is the equation for constant acceleration. Okay, now this a and s, it is in a proper way, it is a vector dot s vector, but we write as as in one dimension, 2as. Because in that case, a dot s is as cos theta, but theta is 0 in one dimension because all the vectors are the same direction. So you write just as. But in most general cases, it is a dot s. But in a special case of one dimension, it is just as. So that you have to be very careful. And this is also an equation for constant acceleration, and final velocity square, initial velocity square is equal to 2 times the acceleration into distance, but a and s are in the same direction, or they may even be opposite. If then we have to write negative sign here. Okay, now fourth one. Now we have v is equal to u plus at, we have s equation, we have this equation. Then sometimes we will be asked to find what's the distance covered in the nth second. Nth second is only 1 second, that's for sure.
लेकिन वो nth सेकंड, थर्ड सेकंड हो सकता है, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ सेकंड हो सकता है, और उसमें क्या है, दैट्स ओनली अ 1 सेकंड, बट इट मे बी the last second, the fifth one or the sixth one. उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, that is s nth, provided the particle moves in a straight line. Of course, particle has to move in a straight line, then you can find s nth, means distance covered in that particular 1 second, but that particular 1 second is just 1 second, but that may be the nth second, fifth, maybe 10th, maybe it is u initial velocity plus acceleration by 2 into 2n minus 1. This is the formula. This n is the number, second number. It may be fifth second. This n has to substitute for 5. If this is 10th second, this n is 10. That's all. These three to four equations, these equations in principle, उसूली तौर पर हमें ये 4 इक्वेशन जरूरी है to solve any problem, any objective in physics, in kinematics. प्रैक्टिकली शायद इन रियल टाइम सिचुएशंस हम नहीं कर पाते हैं, शायद हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, या हमें उसके मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं आते हैं, वो हो सकता है, लेकिन उसूली तौर पर ये जो इक्वेशंस है, these are sufficient to solve any problem of any type in kinematics. Okay, now let me go to some examples. One dimensional motion using kinematic equation. One dimensional motion जो है उसमें सिर्फ इन इक्वेशंस का x, y या z होगा. वन डायमेंशनल मोशन में कुछ भी नहीं है, वो जो हमने इक्वेशंस लिखे हैं उनका x कंपोनेंट लेना है, या y कंपोनेंट लेना है, या z कंपोनेंट लेना है, या x, y, z को अगर मेंशन भी नहीं करोगे, सीधे इक्वेशन लिखोगे समथिंग लाइक दिस. I will write v is equal to u plus at. It's a one dimensional equation. If you don't put arrowheads, that means v, u and a are in the same direction, means it is a straight line motion. You don't even need to write x, x and x, or y, y and y. You just put equation like this. It means that it is a one dimensional motion. Okay, now let me go to the example. Gravitation, in a gravitational field. Okay, fifth, one dimensional motion. Under gravity. Okay, under gravity. One dimensional motion under gravity. So when we talk of gravity, you see, gravity में है, देखो एक चीज क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, ग्रेविटेशन जब हम पढ़ेंगे एक चैप्टर के हिसाब से, तो अच्छा खासा फिजिक्स है उसमें. ग्रेविटेशन, what is the gravitational force, and what is force inside the earth, what is force outside the earth, how much is the force, you see, when you go to the center of the earth, what's the potential energy regarding that force. So many things are there, but for now we know there's a gravitational acceleration which is always vertically downwards towards the center of the earth. That's all. We need only acceleration. For kinematics, what we need? We don't need everything like force, like whatever. We need only acceleration. It is direction. And acceleration due to gravity, if here is earth here, and the object here, is acceleration due to gravity is g, and that is supposed to be constant, 9.8 meter per second square, and or a measurable distance, some distance above the ground, this acceleration due to gravity is supposed to be constant. Although it is not constant, when we go to the gravitation, it changes, of course. When we go high into the space, acceleration due to gravity change होगा, जरूर होगा, decreases with height as 1 by r square. That is something that we are going to discuss in gravitation. लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हम ज्यादा दूर अर्थ से नहीं जा रहे हैं, अर्थ के स्पेस में ही है, नजदीक अर्थ के है, और ये एक्सेलरेशन जो हम लेते हैं कांस्टेंट लेंगे. एंड so that's a good approximation, because what is the acceleration here due to gravity here on the earth? 9.8, and on the top of the Himalayas it is 9.79. तो यहाँ से टॉप ऑफ द हिमालयाज में कितना ही फर्क हुआ. तो अगर मैं अब ये कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, इट इज फेयरली अ गुड approximation. Okay,
नाउ सी हियर, अब मैं क्या करता हूं, हैव ए लुक। पहले मैं एक चीज डिस्कस करता हूं, आई जस्ट प्रोजेक्ट द बॉडी अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u, विद वेलोसिटी u। तो क्या क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में जब मैं एक ऑब्जेक्ट को मास m से, जो है मास m का, वैसे मास तो कहीं आएगा नहीं क्योंकि जब जहां मास आएगा वहां न्यूटन का रूल तो आएगा ही आएगा। मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर vertically upwards, I am throwing an object vertically upwards. So what are the possible questions that could be asked here, or that we can encounter here? तो एक तो ये कि ये कितना ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो किसी पोजीशन पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, ऊपर जाएगा तो टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में, तो फिर वापस आने की बात होगी, और कितना हाइट अचीव करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहला चीज मैं जो निकालना चाहता हूं इसमें, ओके, मैं इसमें निकालना चाहता हूं, लेकिन दिया क्या है ये जरा इस डिब्बे की ओर देख लो ताकि मैं पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन यहां पर पुट करूं। व्हाट आर द गिवन कंडीशंस। पहले इन प्रॉब्लम्स को करने के लिए पहले एक चीज आपको क्लियर करना चाहिए, आपको या तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, मेक ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, विद रेफरेंस टू दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम काम कीजिए, या अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं भी बनाना चाहते हैं फिर फिक्स कीजिए विच डायरेक्शन यू वांट टू टेक पॉजिटिव एंड विच डायरेक्शन यू वांट टू टेक नेगेटिव फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के लिए फिर फिक्स करना है अपना माइंड कि मैंने ऊपर वाला जो डायरेक्शन है वो मैंने पॉजिटिव लिया और नीचे वाला नेगेटिव लिया। किसी दूसरे प्रॉब्लम में चेंज भी कर सकते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो फिर चेंज नहीं करना होगा। तो क्या करेंगे, चलो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने का मतलब यह है कि ये g जो है, ये a y एक्सेलरेशन इज द y डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस g बिकॉज ऑफ दिस कन्वेंशन। तो ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी, ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा बिकॉज आई एम थ्रोइंग इट अप, तो दिस कोइंसाइड्स विद दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और ये जो है ये इसके अपोजिट में आता है, तो a y इज नेगेटिव। तो अब क्या निकालेंगे हम, पहले what we want to find, what we are going to find. Okay, I am going to find what is its velocity after some time, velocity after some time, after time t, after time t. This is a question I make myself कि मैंने इसको ऊपर की ओर फेंका, ऐसे यूं किया, तो after time t मैं देखना चाहता हूं इसका वेलोसिटी क्या है। तो ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू यूज। मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ये देखिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो चूंकि जो मोशन है वो y डायरेक्शन में है, ऊपर नीचे, तो मैं लिखूंगा vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। दिस इज द इक्वेशन आई कैन यूज इन वन डायमेंशन। एंड व्हाट इज vy दैट आई हैव टू फाइंड। चलो v ही लिखो उसको। व्हाट इज uy, दैट इज u। And what about ay? That's plus, it is minus gt. That is v is equal to u minus gt. Answer. Finished. I got it in 2 steps. What are the other questions that can be asked regarding this one-dimensional motion under gravity? What are the other questions? Okay, let me find b इसका। जब मैंने इसको ऊपर के ओर वर्टिकली प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियल मीन्स t इज इक्वल टू 0। व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू सेट टाइम इज इक्वल टू 0 एंड यू आर थ्रोइंग समथिंग वर्टिकली अपवर्ड्स एंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। तो व्हाट इज माय क्वेश्चन, ओके, टाइम ऑफ राइज, कितना टाइम इसको लगेगा ऊपर, नहीं कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में जहां ये स्टॉप होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो व्हाट इज द इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू यूज। मेरे पास है ही कितनी इक्वेशंस, जो इक्वेशंस है वो तो याद ही है आपको भी, शायद मुझे भी, लेकिन if you confine all those equations, because you had to write any of those equations here, but you had to write that equation in a very correct way. अब देखो यहाँ ये वर्टिकल मोशन है, तो आप सोचेंगे हम लगाएंगे vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, क्या वो अच्छा लगेगा? अरे यार मोशन इस डायरेक्शन में है और आप इस डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे, तो इस सूरत में भी vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt।
लेकिन अब चूंकि ये बॉडी स्टॉप कर रही है, द बॉडी इज स्टॉपिंग, ओके हमें लिखूंगा टाइम ऑफ राइज, बॉडी स्टॉप कर रहा है, तो हमारा ये दूसरा चीज गिवन है कि बॉडी जब टाइम ऑफ राइज में बॉडी लास्ट में स्टॉप करेगा, तो इसका मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन, इट इज जस्ट जीरो। व्हाट इज यू है? दैट इज यू ओनली। ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन बाद में आपको ये भी देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गिविंग असाइनिंग वैल्यूज टू द फिजिकल क्वांटिटीज। प्लस ये लिखो व्हाट जी यहाँ पर है, तो व्हाट इज ए वाई? दैट इज माइनस जी। It is time of rise now because it's total, because I have put this equal to 0 now. तो ये यहाँ लाइए जी टी आर इज इक्वल टू यू, तो टी आर इज इक्वल टू यू बाई जी। आंसर, व्हाट द आंसर? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर यूजिंग। तो कोई मुश्किल नहीं है, इफ यू यूज इक्वेशंस करेक्टली कोई मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, और एक चीज मैं करना चाहता हूं, तो हाइट, चलो मैं देखना चाहूंगा टू व्हाट हाइट इट विल गो, टू व्हाट हाइट इट विल गो, किस हाइट के ओर ये कहां तक ये जाएगा, जरा देखते हैं, लेट मी सी। चलो कम से कम ये जो फिगर तो मैं बनाऊंगा यहां पर, और अलग हो रेफरेंस के लिए, यूं बॉडी ऐसे, यूं जाकर के यूं यहां पर स्टॉप हो गया, तो ये एच निकालना चाहूंगा मैं, मुझे एच निकालना है, और वो भी इस डायरेक्शन में। तो कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास जो मैं यूज कर सकता हूं, और यूज तो करना पड़ेगा वन डायमेंशनल फॉर्मूला, ऑब्वियसली एस वाई। सो आई विल राइट एस वाई और हाइट, ओके सी हाइट, हाइट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो इट इज ओके एस इज एस वाई ही लिखो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, maximum height, right? So what is sy? maximum के लिए h. What is uy? That's u. What is t? That's time of rise plus 1/2. What is a? That's minus g. Just time of rise square. Why I substitute time of rise here? Because time of rise I substitute because you see it has stopped here. तो जब जहां तक स्टॉप करेगा तब तक मेरे पास टाइम ऑफ राइज है। तो जब ये मैं ओके एच इज इक्वल टू यू, टाइम ऑफ राइज क्या अभी मिला, यू बाई जी माइनस 1/2 जी टी राइज, दैट इज यू बाई जी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे इजी है, इट इज वन इज हाफ, अगेन हाफ यू स्क्वायर बाई जी, आंसर, दैट इज द आंसर। Okay, let us do it other way around also. Let us do it other way around. दूसरे तरीके से करते हैं, हो सकता है उसे और भी शॉर्ट हो जाए। तो have a look, and it's a clear through steps you can do the things. Physics is essentially very simple if it is done in a logical, in a systematic way through equations. Okay, now D point. D point. Again, I will find the maximum height. Maximum height. I have v square minus u square is equal to as. This is the formula with me. One more, and I will use this formula in this direction, one dimensional direction. What is v square? That is big zero square. What is u square? That is this u square. 2. What is a? That is minus g. What is s? That is this h. See here, when we do things in a very systematic way, in a very logical way, देखिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल होगा, because h you will get a positive value. If you make one mistake here, यहाँ प्लस लिखोगे तो गलत हो जाएगा, because h cannot be negative. So here h is equal to again u square by 2g. शायद हमें एक स्टेप का फायदा हुआ यहाँ पर। अच्छा, I will flip it. I will flip it over. मैं अब ऑब्जेक्ट जो मैं ऐसे कर रहा था, यूं कर रहा था, यूं कर रहा था, अब मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज ही करूंगा, यूं करूंगा रिलीज, देखता हूं क्या होगा। इट विल गिव यू मोर प्रैक्टिस। तो वी विल यूज द सेम सेट ऑफ इक्वेशंस एंड ट्राई टू फाइंड द थिंग्स, राइट? एंड पॉसिबली और एक एग्जांपल लूंगा मैं, लिटिल हैवी वन। मैं एक ऑब्जेक्ट को किसी टावर से प्रोजेक्ट करूंगा वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड लेट मी सी व्हाट हैपेंस देयर। ओके, डी ई, ओके,
Now I am releasing, okay, in gravitation, acceleration due to gravity is like this toward the center of the earth. And you are releasing an object. Initial velocity is 0. Just release means initial velocity is 0. You are not throwing the object vertically downwards like this. You're just releasing it. Just release means just at time t is equal to 0, it is initial velocity is 0. At t is equal to 0. And it falls down, falls down, falls down. Here, I want to find its velocity after some time. And I want to find how much height it falls. These are the two important things. Okay, let me also find how much time it takes to fall to the height h. तो पहले मैं ये निकालना चाहूँगा कितना h fall होगा, यहाँ velocity कितना होगा, और आप इसको याद भी रखो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो चीज़ें हैं वो याद रखो, और दैट इट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर मेमोरी, और कहीं और सिचुएशन में उसको यूज़ ही कर लो, हैवी प्रॉब्लम्स में, ऑब्जेक्टिव्स में इसको यूज़ ही कर लो. तो देखो ज़रा यहाँ पर, what are the equations that I am going to use? वही one dimensional equation in the y direction. Have a look. जरा क्या निकालेंगे, चलो ये निकालते हैं v. तो v is equal to u plus at is a formula. Now y, no need to write y. Don't write a vector here. It means it is a one-dimensional motion. Now what is this v? That is v. What is this u? That is 0. What is a? Minus g. Ay minus g t. V is equal to minus gt. Answer. Minus means that particle has a downward velocity. That is the indication. It gives you full information. ये जो particle यहाँ पर है या body यहाँ पर है, इसका नीचे की ओर velocity है. But it is gt. Acceleration due to gravity, how much time it falls? G is 10. If you take it 10, तो 2 सेकंड में finally it will be 20 meter per second. अगर G 10 है, 3 सेकंड के बाद ये 30 meter per second. Okay, now what is this h? How much height it will fall in the given time? T. इस टाइम में कितना नीचे गिरेगा? तो ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? है क्या आपके पास? भाई फॉर्मूला है वही s. y, चलो y is equal to uy plus 1 by uy plus 1 by 2 ayt स्क्वायर. इसके बगैर कोई फार्मूला है नहीं. इट इज बेटर दैट यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मूलाज, और आपको वही याद रखना है, उसके बगैर कुछ याद ही नहीं रखना है. एस वाई, ओके, दिस एच. मगर आप देखो फिर से मैं आपको बता, इफ यू वांट टू गेट अ करेक्ट आंसर, अदरवाइज अगर आपको गलत आंसर भी लास्ट में मिलेगा, फिजिक्स विल एडजस्ट द आंसर. मैं अगर गलत आंसर भी मुझे लास्ट में आएगा, या मतलब कुछ उल्टा सीधा भी आएगा, तो मैं उसको लास्ट में एडजस्ट कर सकता हूं, पॉसिबली बिकॉज ऑफ फिजिक्स. लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पहले ये करो कि आप डायरेक्शन दे दो. किस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव, क्या करना चाहते हैं आप यहाँ पर? ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन देना चाहते हैं या नीचे की ओर पॉजिटिव, वट एवर यू लाइक. शायद आप सोचते हो कि मैं हमेशा ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन देता हूं. चलो आज ये देते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ तो अब ये नहीं कहना कि ये डायरेक्शन क्या है, वो तो नेगेटिव होता ही है. चलो मैंने नीचे की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन दिया. नीचे की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन देने का मतलब ये है कि h पॉजिटिव होगा, क्योंकि h इज फॉलिंग डिस्टेंस, नीचे वाला डिस्टेंस, सो माइनस h हो गया. व्हाट इज u बाई t? दैट इज 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, प्लस 1 by 2. व्हाट इज ay? व्हाट इज ay? ये पॉजिटिव है, h इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ फॉलिंग डिस्टेंस. आई हैव टेकन दिस एज पॉजिटिव. व्हाट अबाउट g ay? g भी पॉजिटिव है. क्यों? Because I have taken this as positive, right? So what is h? 1 by 2 gt square. Answer. कितना हाइट फॉल होगा इन द गिवन टाइम? g को सबस्टिट्यूट करो, t को सबस्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिलेगा. वैसे इट्स ए जनरल फॉर्मूला, वेरी नाइस फॉर्मूला. एक बॉडी जब फॉल होता है इन टाइम t, इट विल फॉल 1 by 2 gt स्क्वायर. अब ये नहीं सोचना कि अगर हम ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेते तो हमें आंसर डिफरेंट आता है. यहाँ भी देखो पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव. यहाँ कोई ऐसा नहीं कि h नेगेटिव मुझे मिला. तो देखिए अगर मैं ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव लेता तो बाय दैट डेफिनेशन ये नेगेटिव आ जाता. सोचो जरा, सोचो. अगर मैं ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेता तब जाकर h क्या आता? नेगेटिव आता कि नहीं? लेकिन उस वक्त में g भी नेगेटिव आता है.
तो फिर से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यू विल गेट द करेक्ट आंसर व्हेन यू आर मतलब कंसिस्टेंट, व्हेन यू स्टिक टू द रूल्स। अभी जी को एक चीज लोगे और एच को दूसरा चीज लोगे और पता नहीं चलेगा व्हाट यू आर डूइंग, तो इसमें ये करना पड़ता है। हाँ, अगर मुझे पर्सनली, अगर एनी फिजिक्स नोइंग पर्सन नेगेटिव भी उसको आया, उसको पता है कि नेगेटिव मीन्स व्हाट इट मीन्स या व्हाट पॉजिटिव मीन्स, लेकिन फिलहाल आप यू डू इट कंसिस्टेंटली, वट एवर इज टॉट टू यू, एक तरीके से कर लो। आखिर में शायद आपको भी फील होगा फिर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो एच हुआ। नाउ अब टाइम क्या निकालना है? टाइम तो निकला, खुद ही निकला, ये जी, ये टी और एच, और टाइम अगर निकालना है तो वो एच में निकालना पड़ेगा। तो इसी में अगर आप करोगे दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय जी। ऐसे देखो, 2 यहां पर, g फिर नीचे, और t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाय जी। Whenever a body falls from certain height, initial velocity there 0, initial velocity must be 0. Otherwise आप कहेंगे this is a general formula under all the cases. No, ऐसा मत करना। ये तब फॉर्मूला है जब आपने किसी चीज को रिलीज किया किसी जगह पर, और जस्ट रिलीज किया जहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब जाकर जब ये बॉडी फॉल हो रहा है उसको टाइम लगेगा हाइट h फॉल होने में root of 2h by g. Okay. Now, let me go to a more complex, a little complex problem. Let me see how you try to do that. Point number, possibly 4th point it is. It's a tower of height 40 meters. It's a height of tower 40 meters. And here is the object, you are throwing it up with the initial velocity 10 meter per second. We have to find in how much time it will go up and then fall down to the ground. हमें time निकालना है. And you have that single formula which you have to use. I already told you, you have a set of rules, set of equations. हर चीज में, हर सिचुएशन में, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी सिंपल हो, आपको वही इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। अब यहां जरा देखिए आप, इंटरेस्टिंग चीज, कुछ लोग करेंगे उसको ऐसे, यहां से यहां कितना टाइम लगा, स्टॉप हुआ, फिर यहां से यहां कितना लगा, क्या ऐड, फिर यहां से यहां कितना लगा, क्या और ऐड। देयर इज अ वेरी, मैं क्या कहूंगा, क्रूड वे कहो या कोई अच्छा तरीका नहीं है वो। आपको पहले ये सोचना है, जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन यहां है, फाइनल पोजीशन यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट तो पहले आपको निकलेगा। इट इज इनिशियल पोजीशन, कहीं भी गया, कहां भी गया, कहीं wherever it has gone, but finally it has reached here. So displacement is from here to here. That is this displacement. कितना है डिस्प्लेसमेंट sy, या y ही समझो, that is -40 if you take upward as positive, because now displacement is from initial position to final position. यहां पर लोग बहुत वो करते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, लेकिन यहां पर वो समझते हैं कि शायद पार्टिकल यहां गया फिर यहां गया, तो वो गलत सोच है। इनिशियल और फाइनल को मार्क करो और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, वो तो वही चीज 40 है। अच्छा, नाउ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? What is initial velocity? That is uy, okay, that is 10 meter per second. That is positive because we have taken this direction, this is positive, it coincides with positive. You can do other way around also, like this, and that will also give you the same answer. So what is the equation that I am going to write? Sy is equal to uyt plus 1 by 2 ayt square. जो यहां से t निकलेगा वो बराबर वो पूरा टाइम निकलेगा। इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपको बिकॉज इनिशियल फाइनल पोजीशन आपने नोट किया और आप ये इक्वेशन लगाकर आपको टाइम मिलेगा। लेकिन वहां पर ठीक है, आपको 2 टाइम मिलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा शायद t स्क्वायर की वजह से, लेकिन आपको पिकअप अच्छा वो फिजिक्स पॉइंट से आपको वो टाइम पिकअप करना पड़ेगा जो आंसर है। व्हाट इज sy? -40. व्हाट इज uy? दैट्स 10. व्हाट इज टाइम? दैट यू डोंट नो, प्लस 1 by 2. व्हाट इज ay? ओके, लेट मी टेक इट -10 because it is g here, 10, because of downward direction opposite to this t square. It is -40 is equal to 10t minus 5t square.
right? Okay, cancel 5 everywhere. It is 5, it is 2, it is 8. 5 2 8 cancellation. Now t square you get onto the left side, get 2t on the left side, that's minus 2t minus 8. It becomes a quadratic equation. So when a particle goes from here and comes down, you find time from here. But again, जब आप टाइम निकालोगे तो आपको दो टाइम्स निकलेंगे, तो यू हैव टू चूज द राइट टाइम जो फिजिक्स में आंसर होगा. ठीक, ओके. ये तो क्वाड्रेटिक हो गया. तो क्वाड्रेटिक में क्या है, t इज इक्वल टू ये 2 प्लस माइनस रूट ऑफ what is this 2 का स्क्वायर, that is 4 minus 4 into this, so go positive because it is minus 4 AC by that formula, 32 by 2. This you know because it's a quadratic equation. Everybody knows what is x, that ax square plus bx plus c, x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac by 2a. Everybody should know that by now. That's the 8th class syllabus. Anyway, तो अब क्या करूं, अब तो करना चाहिए मुझे टाइम निकालना होगा. दैट इज 2 प्लस माइनस इट इज 4 प्लस 32 36 उसका रूट 6 by 2. It is t is equal to पहले 2 plus 6 that's 8 by 2 that's 4, that's 2 6 minus 6 that is 6, that's minus 4 by 2 that's minus 2. These are the two times that you got from that equation. तो यहां से यहां जब पार्टिकल आता है, गिर जाता है, तो कितना टाइम लगा इसको, या 4 सेकंड या -2 सेकंड. -2 सेकंड का मतलब है नहीं. -2 means just going back in time. That may be good for a mathematician to know much about this, but for physics person it has no meaning. Physics person will pick up a right time, that is 4. 4 is the answer. But now mathematics people ask us, what does the -2 mean? They don't know it. Mathematics people possibly, but physics person has to explain what -2 means. What does -2 means? जब आपने इसको यहां प्रोजेक्ट किया ऊपर की ओर with 10 meters per second, ये आपको पता है, आपने इसको प्रोजेक्ट ऊपर की ओर किया. इक्वेशन को पता नहीं था. इक्वेशन को पता था शायद ये यहां से आया नीचे से, और नीचे आकर के यहां क्या वेलोसिटी हुआ इसका 10. तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब यह है कि ये इस ग्राउंड पर 2 सेकंड पीछे था, यानी कि 2 सेकंड इसको यहां से यहां लगे, लेकिन आपने t इक्वल टू 0 यहां कर दिया, इसलिए ये t इक्वल टू -2 हुआ. फिर से बताता हूं, ये जो ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया, इक्वेशन को ये नहीं पता कि आपने इसको थ्रो ऊपर की ओर किया. इक्वेशन को ये पता है कि यहां पर वेलोसिटी 10 है. इक्वेशन ने ये इमेजिन किया ये नीचे से आया है, यानी कि अगर यहां t 0 है, ये पहले से इधर से आया है, तो माइनस टाइम से नीचे से आया है. तो यहां पर ऑब्जेक्ट -2 सेकंड पर था, मतलब ये 2 सेकंड पहले यहां पर था, 2 सेकंड के बाद यहां पर आया. दैट इज हाउ द इक्वेशन हैज गिवन द राइट आंसर, बट यू पिक अप द राइट आंसर एज ए फिजिक्स पर्सन. थैंक यू. This is the second lecture on kinematics. Just watch the lectures, work them out, try them, watch them many times, and finally you will think physics is very interesting, very easy. Thank you. Thanks all.